Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter 11 from standard 7 and the topic is cell. What is cell? So, cell is the structural and functional unit of life. We can say the cell is the fundamental structural and functional unit of life. हर एक किसी चीज का बिल्टअप जो होता है वो सेल से होता है. अगर हम सेल के रिगार्डिंग बात करें, इफ यू कैन से अल्फाबेट, उससे बनते हैं वर्ड्स. फ्रॉम मेनी वर्ड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, देन फ्रॉम मेनी सेंटेंसेस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ, and after that we can construct a chapter, and from many chapter we can build up a book. So same is the case with the cell also. अगर हम बात करें structural organization of the cell, in that concern cell, from many cells we have a tissues, from many tissues we have organs, and from many organs we can have a organ system, and from organ system we have a organism or a whole body. So same is the case with the alphabet. We have a cell and the chain and the structural organization of the cell. If we can talk about the cell invented by scientist Robert Hooke. Scientist Robert Hooke in 1665 with the onion pill or a cork material. If we can say, if we observe the cell under the microscope, because cell is not seen by the naked eyes, हम सेल को हमारी naked eyes से नहीं देख सकते, इसीलिए हमें सेल का स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का भी नीड होता है. अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन है वो किया था 1673 में एंटन वैन लीeuwenhoek ने. इन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया. माइक्रोस्कोप कैसे बनता है? बहुत सारे जो एडवांस लेंसेस होते हैं उनका एक जगह पे बिल्टअप करके माइक्रोस्कोप डेवलप किया एंटन वैन लीeuwenhoek ने. एंड फ्रॉम दैट माइक्रोस्कोप और लेंस मटेरियल यूज करके रॉबर्ट हुक ने सेल जो है इन्वेंट किया फ्रॉम दी कॉर्क मटेरियल. अगर हमें सेल का स्टडी करना है, if we can study regarding this cell and cell structure and the components present in the cell structure, ये सब चीजों का जब हमें स्टडी करना है, at that time हम क्या कर सकते हैं? ऑनियन, प्याज जो होता है, ऑनियन उसका ऊपर का कवरिंग निकाल के ऑनियन पिल जो हम उससे सेपरेट करेंगे, उसे विदाउट ब्रेकिंग, at that onion pill section is put under the glass slide and put a cover slip on that, and that glass slide is put it on a compound microscope with power 10x. Then 10x, that means it is having 10x, that means it magnifies the power to the 1000 times. So इस तरीके से हम सेल का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं. अगर हम बात करें ऑनियन पिल की, if we can see the structure of onion pill on the microscope, we can see the hexagonal structures. That type of cell structure is seen on the microscope. So this is the cell present in each of the compartment, and this type of material is seen under the microscope, and this is the nucleus. Okay, this is the nucleus. So from that reference we can identify the cell size also. अगर हम सेल साइज की बात करें तो for each cell we have a different shape and different sizes are there. अगर हम सेल साइज की बात करें तो वो उसके डायरेक्टली उसके फंक्शन से रिलेट करता है. जैसे उसका फंक्शन रहेगा उस हिसाब से उसका साइज रहेगा. ठीक है. इफ वी कैन से चिक सेल, एग सेल, देन नर्व सेल, हर एक सेल का साइज जो है वो उसके फंक्शंस पे डिपेंड करेगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द सेल, वी कैन से कि columnar,
then spiral, oval, rectangular, rod-shaped cells structure are present. We have a different cell structure, different cell sizes are there from different cell material. So this is all about what? Cell. And what is cell? Cell is the structural and functional unit of life, क्योंकि हर एक जो चीज होती है, जो लिविंग सेल्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हर एक फॉर्मेशन है वो सेल से हुई हुई है. सो इन दैट रेफरेंस अगर हम बात करें, सो दिस इज दी सेल जिसका कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, देन सेल साइज एंड शेप ऑफ दी सेल. Students, there are two main types of cells, plant cell and animal cell. So in this plant cell and animal cell, some peculiar characteristics are there, just like cell wall, then plasma membrane, in which we can first see the plant cell, then animal cell. So in the plant cell, we can have the specific cell structure is present only because of the cell wall, because the cell wall is present only in the plant cell, not in the animal cell. Then the embedded material between the cell wall and after cell wall, there is a membrane which we called it as a plasma membrane or cell membrane, which is present after the cell wall. So in between the plasma membrane and the nucleus, there will be cytoplasm embedded in the cell, and in the cytoplasm different cell organelles are present. So if we can say plant cell, the cell wall is present, cell membrane is present. What is the function of the cell wall? To provide the proper shape, rigidity and outermost covering to the cell. Then after cell, there will be a chloroplast only present in the plant cell, because chloroplast help in the photosynthesis process. From the photosynthesis process, plant prepare their own food by the process of photosynthesis in presence of sunlight. Then cytoplasm is present, which is embedded in the cell in between nucleus and the plasma membrane, or we can say cell membrane. After that, there will be large vacuole present only in the plant cell. If we can compare with the animal cell, there will be small vacuole present in the animal cell and there will be a large vacuole present in the plant cell. After that, the endoplasmic reticulum is also present in both the cells, plant cell as well as animal cell. Then Golgi body is present, nucleus is present in plant cell and animal cell also. And what is the function of the nucleus? It controls the whole activity of the plant cell and animal cell. So if we can talk about the nucleus, so nucleus is present in plant cell and animal cell also. Then Golgi body is also present in the plant cell and animal cell. And what is the function of Golgi body? It provides the protein and convert the ribosome into the cell. So this is the structure of the plant cell. And we can talk about the structure of animal cell. If you can see, Golgi body is present. Golgi body is present in both plant cell and animal cell. Then cell membrane is present. Cell membrane, which is the outermost covering of the animal cell. But if we can say with in plant cell, the cell membrane is not the outermost covering of the plant cell, क्योंकि यहाँ पे cell wall present होती है, ठीक है? So this is the outermost cell membrane is the, or the plasma membrane we can say, is the outermost covering of the animal cell. Then nucleus is present in both the cells, plant cell, animal cell. Endoplasmic reticulum is connected to the nucleus, is present in both the cells. After that, small vacuole or no vacuole is present in the animal cell.
vacuole, what is the function of vacuole? So it store the amount of food and waste material, and it helps to excrete the waste material from the cell. This is the main function of the vacuole. So after that, cytoplasm is present, in which the nucleus and the cell membrane or plasma membrane, all over the cell, the cytoplasm is present. And what ये cytoplasm क्या काम करता है? ये पूरी all over the cell में present रहेगा, और ये in between the cell membrane and the nucleus, जो पूरे cell organelles है, इन्हें इसमें embedded रखने का काम करेगा. आफ्टर दैट, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? इफ वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. देन साइटोप्लाज्म इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स, प्लांट एंड एनिमल आल्सो. द एनिमल सेल इज स्मॉलर इन साइज as compared to the plant cell, and plant cell is having the large size. Then cell wall is present in the plant cell and cell wall is absent in the animal cell. Then vacuole are present, large vacuole are present. Out of the all organelles, we can say most of the part in the plant cell is occupied by the vacuole only, and there will be a single large vacuole present in the plant cell. After that, small or no vacuoles are present in the animal cell. Then chloroplast is present only in the plant cell, not in the animal cell. Why? Because हम ये कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, by which plant prepare their own food, the chloroplast is important. ठीक है, और एनिमल्स जो कि खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, या वो नहीं करते हैं खुद का फूड खुद प्रिपेयर, सो यहाँ पे क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है. अभी देयर विल बी अ वन ट्रिक टू अंडरस्टैंड द difference, and the major difference between the plant and animal cell is the cell wall. ये है इसका major difference. हम स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि किस चीज में सेल वॉल प्रेजेंट है और किस चीज में सेल वॉल एब्सेंट है. सो देयर विल बी वन ट्रिक. जो ट्रिक आपको याद रखनी है, ट्रिक क्या याद रखनी है कि हमारे घर में कंपाउंड वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो हमारे घर में कंपाउंड वॉल प्रेजेंट होती है. जो बहुत रिच लोग होते हैं उनके यहाँ पे कंपाउंड वॉल प्रेजेंट होती है, और उसके बाद में जो होता है कंपाउंड वॉल के पीछे में डोर होता है और आपकी दीवार होती है, जो फर्स्ट रूम की या हॉल की दीवार आप कहेंगे. तो ऐसी दो मेम्ब्रेन यानी दो लेयर प्रेजेंट होती है रिच लोगों के घर में. सो प्लांट सेल इज द रिच सेल, इसे हम रिच लोग कहेंगे, जिसमें सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर हम ट्रिक की बात करें तो कंपाउंड वॉल भी प्रेजेंट है और डोर वाली भी वॉल वहां पे प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ द प्लांट सेल. But in terms of the animal cell, they are little bit poor from the plant cell. जिनके घर में कंपाउंड वॉल नहीं है, जिनके घर में डायरेक्टली उनकी वॉल प्रेजेंट है, जिससे हमने क्या कहा है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And what is the function of plasma membrane and cell membrane? It is selectively semi-permeable membrane. What does mean by selectively semi-permeable? किसे उस सेल के अंदर एंटर करना है और किसे नहीं करना है, ये डिसाइड कौन करेगा? यहाँ पे ये डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन और दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So we can talk about the cell membrane. It is selectively semi-permeable membrane. This is the main function of the cell membrane or plasma membrane. Then Golgi body, it performs the function, it helps to form the protein and convert it into the formation of the ribosomes. Then we can talk about the nucleus and function of the nucleus. It control all the activities of the cell. ये पूरी जो सेल है इसकी एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम करेगा न्यूक्लियस. देन यहाँ पे अगर हम वैक्यूल की बात करें, यहाँ से एक्सक्रीट मटेरियल जो है वो आउटसाइड द बॉडी भेजने का काम जो करेगा, आउटसाइड द सेल भेजने का जो काम करेगा वो वैक्यूल का रहेगा, और वो फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ द प्लांट सेल. दैट इज व्हाई वी हैव अ बिग वैक्यूल एंड सिंगल वैक्यूल
present in the plant cell. Then another important thing is present, and this is the mitochondria, and mitochondria is present in both the cells, plant and animal cells. And what is the function of mitochondria? It performs the function, it is a powerhouse of the cell. It provides the energy to the cell. ठीक है, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. कौन? Mitochondria. So this is all about the difference between plant cell and animal cell. और यहाँ पे peculiar characteristic कौन है? यहाँ पे cell wall present होती है और animal cell में cell wall absent होती है. Then cytoplasm, which यहाँ पे क्या होता है? ये पूरी organelles जो है वो embedded है in, और कहाँ पे present होती है? In between the nucleus and the cell membrane. Then what is the major function, major difference in between the plant cell and animal cell? Cell wall. Then chloroplast is absent in the animal and present in the plant cell. Then small big vacuole present in the plant, absent in the animal cell, and there will be a large size in the plant cell and small size present in the animal cell. This is all about the cell structure, difference between plant cell and animal cell, and functions of the plant cell and animal cell. Hope you understand all the concept regarding the cell and difference between them. Thank you.